about your homework, what you have done. Well, so tell me something about your Gurukul classes. Can you listen to me, Bhagyasri? Yes, sir. So tell me something Uh, about your Gurukul classes. The first question. mhm. Gurukul classes. Uh, Gurukul classes is the my Gurukul classes is affiliated with Maharashtra Board as well as रुकिए CBSE भाग्यश्री, भाग्यश्री, कोई भी चीज़ हम बोलते हैं ना तो पहले टॉपिक सेंटेंसेस होते हैं. जैसे पहले बताएंगे गुरुकुल क्लासेस इज वन ऑफ द बेस्ट क्लासेस इन मुंबई फॉर okay. एकेडमिक प्रिपरेशन. मतलब किस चीज़ के लिए आपने डायरेक्ट बताया अफिलिएटेड है. सबसे पहले बताएंगे कि गुरुकुल क्लासेस किस लिए है. ओके, फॉर क्लास 10, फॉर क्लास 8, 9, 10. ओके, और ये बेस्ट क्लासेस है, यहाँ से स्टार्ट कीजिए. गुरुकुल क्लासेस इज वन ऑफ द बेस्ट क्लासेस इन मुंबई फॉर द स्टूडेंट ऑफ 8, 9 एंड 10th स्टैंडर्ड. ऐसे ट्राई कीजिए. पहला सेंटेंस टॉपिक सेंटेंस होता है, उसको उसमें इंट्रोडक्शन होता है जो चीज़ आप बोलने जा रहे हैं. चलिए फिर से स्टार्ट कीजिए. Gurukul classes is one of the best classes uh, इन मुंबई in Mumbai फॉर, uh, किस लिए है? for फॉर 8, 9, 10 स्टूडेंट. Maharashtra state and 11, 12 science section दैट्स ग्रेट. हाँ. and, and and engineering and medical entrance exam. दैट्स गुड. अब आपको इसके बाद डायरेक्ट आप अफिलिएटेड नहीं बताएंगे. देन यू से कि इट वाज एस्टैब्लिश्ड. इट Okay. वाज, समझ में आ गया ना? फाउंडेड, एस्टैब्लिश्ड इन Sir. ईयर. हाँ तो बोलिए. दैट्स वाई आई हैव टोल्ड यू द सेम. कम ऑन. यह कब स्थापित हुआ, यहाँ से स्टार्ट. पहला सेंटेंस हो गया बेस्ट क्लासेस से, दूसरा स्थापित हुआ. अब बोलिए. Gurukul classes started uh, in 2008. 8. एक्चुअली टू. 2002 से लेके हम लोगों ने स्टार्ट किया था, लेकिन अनादर नाम था। बाद में हम लोगों ने पार्टनरशिप निकाल के खुद का स्टार्ट किया। जी हाँ. तो आप स्टार्ट कर सकते हैं. इट वाज एक्चुअली स्टार्टेड in 2002, but after some time we changed its name and formally we established in 2008, okay, in the name of Gurukul classes. ट्राई कीजिए, कोशिश कीजिए जो मैंने अभी आपको बोला. एक्चुअली इनफैक्ट से स्टार्ट कर सकते हैं. यानी कि ये सब चीज़ें सेंटेंसेस गैप फिलर्स होती हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट्स होते हैं. डिस्कोर्स मार्कर इसको बोलते हैं. यानी कि कोई चीज़ स्टार्ट करने से पहले, जैसे बेसिकली, एक्चुअली, इनफैक्ट, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट से हम सेंटेंस को स्टार्ट कर सकते हैं. जब किसी चीज़ के सत्यता के बारे में बताते हैं तो बोलकर दिखाइए. बहुत अच्छा सेंटेंस. यानी आपके कम्युनिकेशन में भी और 4 चांद लगेंगे ऐसे. बोलिए. एक्चुअली we started it 2002, but हाँ, इन after अदर some नेम, बट हाँ ठीक है, ट्राई कीजिए. बट आफ्टर सम टाइम. 2002 सर उसका नाम रियल एकेडमी था। सो तो कैसे वी थोड़ा सा। स्टार्टेड. देखिए, हम लोगों ने स्टार्ट किया था इन पार्टनरशिप में रियल अकेडमी के नाम से. तो वी ओके। देखो, हम लोगों ने, देखो, 3 अलग अलग फ्रेज हैं. हमने स्टार्ट किया रियल अकेडमी के वी नाम आर से 2002 में. तो 3 इसमें फ्रेजेस हैं ना, 3 अलग अलग फ्रेज हैं इसमें. तो वी स्टार्टेड this institution in year 2002 in the name of, या एज अ रियल अकेडमी. अब ऐसे बोलिए. 3 अलग अलग सेंटेंस स्ट्रक्चर्स हैं इसमें.
बोलो. Actually, uh, we started the institute, the name of Real Academy, Very good. uh, for partnership. हाँ हाँ, Uh, कंटिन्यू कंटिन्यू, वो गलत या सही ट्राई कीजिए. एज अ Name of पार्टनर. Real Academy. यस. Part, हाँ, इन हाँ, एज अ partnership. पार्टनरशिप फॉर्म एंड. As a part, 2002. दैट्स. Then we are separate. देन हाँ, वी बिकेम, हम हो गए अलग. We वी became बिकेम then we सेपरेटेड. became separate, सेपरेटेड. and we started our ownership गुड. classes. The name of Gurukul. हाँ. Gurukul is the one of the best classes in Mumbai. फॉर. Uh, we started Gurukul in 2008. यस. Uh, 2008, there was a small office, reception area, two classroom, वेरी गुड. one is education counselor room, and one teacher room, and washroom also. Uh, there was there was just 12 staff, देखो, जब देर बहुत सारे, including जब 12 स्टाफ बोलेंगे ना, तो देर वर लगाएंगे, तो बेटर यहाँ से. there. यस, बेहतर, इससे बेटर सेंटेंस ये है, वी हैड 12 We had स्टाफ्स. या हमारे पास था पहले. व्हेन वी स्टार्टेड वी हैड ओनली अ सिंगल क्लासरूम, 2 टीचर्स. तो वी हैड हमारे पास था, वहाँ से we देर had आर कस्टमर छोड़ देंगे. started. We had started this class, the single, मतलब two classroom, हाँ, विथ 2 क्लास. and 12 staff, including me and my husband. Uh, six is a non-teaching staff, and 6 is a teaching staff. 6 के बाद इज लगाएंगे, अच्छा नहीं है ना सेंटेंस. इफ वी 6 और इज नहीं अच्छा है ना. देखो, आप ऐसे बोल हाँ, सकते हैं. मैंने हैड का इस्तेमाल बताया, यानी कि आपके पास था. ठीक है. आपने स्टार्ट किया था, यानी कि एक्शन होगा. वी हैड स्टार्टेड. बट शुरुआत के लिए क्या वर्ड है? शुरुआत में, शुरू में. फ्रेज बताइए. इन द बिगिनिंग बोलिए. इन द बिगिनिंग बोलिए फिर से. इन द बिगिनिंग. in the beginning. वी हैड हमारे पास था. वी हैड मतलब हमारे पास था. वी हैव मतलब हमारे पास है. तो अभी है वाला छोड़ देते हैं, फास्ट हो जाता है. इन द बिगनिंग वी हैड अ सिंगल क्लासरूम एंड वी हैड 6 टीचिंग स्टाफ एंड वी हैड 6 नॉन टीचिंग स्टाफ. टोटल वी हैड 12 स्टाफ. देखो, वी हैड से काम चल रहा है ना, हमारे पास था. अब बोलिए. In the beginning, we had single classroom. वेरी We गुड. had 6 staff. We had teaching. Uh, teach, we had 6 staff in teaching, and we had 6 staff in non-teaching. वी हैड 6. आप बोल सकते, वी हैड 6 नॉन टीचिंग स्टाफ. ठीक है. वी हैड 6. चलो, दिस इज नाउ गुड. आई थिंक यू आर इम्प्रूविंग. अभी आपको समझ में आ रहा है ना कि आप क्या बोल रही हैं. या कम ऑन, Yes. continue. And it is, everything is recorded. When you miss it, no, again you see the recording and see what you are speaking and what I am suggesting you. अभी खेल खेल में हम क्या कर रहे हैं? हम आपके टेंसेस पे भी काम कर रहे हैं, है ना. आई एम ऑल्सो वर्किंग ऑन योर ग्रामर एज वेल एज वोकेबलरी, सेंटेंस मेकिंग सेंस. when you are speaking, of course you are going to learn the range of vocabulary and also understand the sentence structures. Okay, as well as I'm also emphasizing what to use, where to use the preposition, where to use the verb first form, second form, like this. Okay, now continue. Then you had 6 non-teaching staff and 6 teaching staff. Then continue after that.
uh, हाँ, sir. after that. Now I Now if you now compare. now I will I One more thing you can add, Bhagyasri, एक चीज और आप जोड़ सकती हैं, that how you started your second branch, how you started your third branch, and in which year, then you will, we will have lot of sentences to speak. आपके पास बहुत सारे sentences हो जाएंगे बोलने के लिए. Then समझ में आ रहा है ना? You understand what I'm saying? So try to yes, speak about कि when then you 2008 you started with one your own Gurukul start. Then what happened the next when you started the second and where? कब स्टार्ट किया, कहाँ स्टार्ट किया, कितने स्टाफ थे. तो देखो यू हैव अ रेंज ऑफ स्पीकिंग सेंटेंसेस. कम ऑन. देन व्हाट हैपेंड, व्हाट द सेकंड थर्ड एक्सप्लेन कीजिए. then we have start our second branch वी is to स्टार्टेड, वी oh sorry स्टार्टेड याद then किया ना, मतलब पास्ट मैंने समझाया था, yes, हमने शुरुआत की. या देन यानी uh, कि फिर then we started our second branch uh, in Kalyan West nearby Khadakpada वेरी गुड. uh, in 2009. दैट्स इट वाज नाइस Then सेंटेंस. And how many staff then you started with? How many staffs did you have that time? Student, try to that speak that time. Hmm. total, yes, sir, only Only in a second the for the second branch. okay. Uh, for the second branch, we have We had हमारे पास था second branch के लिए. sorry, we हाँ. had six staff uh, and for another teaching staff, including Gurukul. That's good. Yes, sir. That's it's okay. Now it is you are improving. Now then how what happened? Then after how many Then years? हाँ 2009 बोली हाँ उसके बाद in एक और ब्रांच 2000. स्टार्ट किया. आफ्टर दैट यू स्टार्टेड वन मोर ब्रांच. Yeah, So then we have started yeah, we have our started. third We branch. started. अब यहाँ से We थोड़ा सा start हाँ. Then you when then you give some uh, variation. Wait भाग्यश्री. Then you give some variation in your sentences. यहाँ से थोड़ा change कीजिए. And after 3 years, after three okay. years, after 2 years, we have started another branch in भिवंडी. ऐसे बार बार हम And after वी स्टार्टेड बोलेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा ना. मतलब अच्छा लगेगा बट दैट्स बोरिंग. ट्राई टू चेंज द सेंटेंसेस एंड यू हैव एवरीथिंग. कम ऑन. एंड आफ्टर 2 years, 3 years, and after 2 years, yes, we we have have we started. uh, we started another branch Very in good, Bhiwandi, very good. 2010. In yeah, in year 2000. 2010. Hmm. Uh-huh. Year and Hmm. year 10. 2010. Yeah, well, that's good, very good. Our third branch. And that again, location as well as then how many teaching staff that you had, and what kind of classroom and office. Try to explain it. Uh, this branch is my dream branch. बहुत Hello. अच्छी. हाँ हाँ, I'm listening. This branch was my dream branch. This branch was my dream branch because totally uh, I work for this branch. Yeah, I have responsibility. I have taken responsibility for this branch. I took responsibility. मैंने लिया है नहीं, Two. मैंने लिया. Because I Uh-huh. took the responsibility of this branch in Kalyan and try to In Bhiwandi. हाँ,
Try कीजिए. because I took responsibility in Bhiwandi branch. The location is The location Dhamankar was, Naka. location was. The location was Dhamankar Naka, Bhiwandi. That's Uh, great. Then how you when walked? we started, when we started this branch, there was uh, 8 new staff. Wait, wait. जब आप 8 बोलेंगे ना तो there was नहीं बोलेंगे, there were बोलेंगे. When you There have were, हाँ, yeah, plural and there singular. were When we started, so there were yeah, फिर बोल सकते, when we started then I had या we had 8 teaching staff like this. हमारे पास था या फिर total थे. अब try कीजिए, try to speak. Continue. total, हाँ, Hmm. When we started, then we had total 8 teaching staff in that branch, and I was the responsible person to run, and I worked very hard for that. Okay, personally, I managed all teaching staff as well as students. Try कीजिए, no, try to speak. Yeah. um, I was then we started this branch. Uh, there were there were 8 staff. बहुत अच्छा. There was when it started, then there were 8 staff. 8 staff and uh, 6 teaching staff, including consist this branch. चलेगा सर? ना ना, including कितने, including तो 6 non-teaching staff. total actually 8 and 6, 14 staff Yeah, I that, recruit. yeah, I recruit. I appointed, I recruited total 16 staff in that branch. Okay. Understand? I I rec- recruited there. I recruited there were 14 staff in hmm, this branch. yeah, in that branch. Okay. Then hmm, speak ahead. Then for in Bhiwandi, that time, that time, our first year for Gurukul, Hmm. Gurukul, The first year of Gurukul in Bhiwandi, like this. Gurukul, the students, सर मुझे ये बोलना है कि एक अच्छे स्टूडेंट हो गए एक्चुअली उस टाइम ना Hmm. एक वन एक्चुअली हाँ. हम लोगों ने बड़ा ऑफिस लिया 4 क्लासरूम लिए एंड चारों क्लासरूम फुल होते थे मॉर्निंग में भी और इवनिंग में भी तो देखो इसको तो ऐसे बोले सब एक पास. टोटल 280 स्टूडेंट दैट टाइम मतलब एक अच्छे से बैच हुई थी हमारी Okay, तो मैं इसको बताता हूँ. Everything is in past. When we started, we had only a single classroom, and we had 240 students, and the batches were full in the morning as well as in the evening. Then we extended, when हमने बढ़ाया, we took another office, another classroom like this. Try to speak. अभी आपको मैंने जो past सिखाया है ना, यह इसी पे बनेगा sentences. मराठी में सोचिए, हिंदी में सोचिए, एंड ट्राई टू गो विथ, टेक टाइम, नो प्रॉब्लम. दैट्स वाई दिस इज योर लर्निंग प्रोसेस. अभी देखो मुश्किल से 4-5 क्लासेस की हैं, बट यू कैन थिंक ऑफ योर सेल्फ कि हाउ यू आर इम्प्रूविंग. आपको लग रहा है इम्प्रूवमेंट है, and you यस are speaking good, that, and after some time you will find you're speaking very fast. The sentence will be coming in your mind and you will translate it. After some time this process will be away and you can start directly speaking in English. Okay,
Then speak the same. When we started in the beginning, so we had like this. When the started in beginning, uh, when they started in beginning, uh, we have started one classroom हाँ, and one single classroom and one office तो देखो ऐसे बोले, area. जब हमने स्टार्ट किया तो हमारे पास सिर्फ एक क्लासरूम था, एक Hmm. ऑफिस था. व्हेन वी स्टार्टेड वी हैड ओनली वन क्लासरूम एंड वन ऑफिस, एंड इट वाज वेरी स्मॉल स्पेस. इट वाज, यह था, बहुत छोटा स्पेस था. तो बोल के दिखाइए. व्हेन वी स्टार्टेड आई हैड ओनली वन क्लासरूम, वन रिसेप्शन एरिया, एंड वी हैड वेरी लिटिल स्पेस. ओके, बोल के दिखाइए. When we started. Beginning we have started uh, नहीं नहीं, we have, only when we we when, had हाँ, when यानी कि जब, when we started in the beginning we had, या फिर अगर I बोलते हैं तो I had. चलो ट्राई कीजिए. when we started in beginning, I uh, we had only one single classroom Very good. and very small office area and Yes, reception area. Uh, this is nice sentence. then the response, then the That students' response, was fabulous and amazing. बोलो. The student. then Yes, then students' response was amazing. that's great. So I uh, so I Hmm. Think and speak. कोई बात नहीं. सोचिए और बोलिए. और I know that this time you can speak. Think, no problem. Take your time. Then I uh, और दो क्लासरूम. तो हमने और दो क्लास और स्टार्ट किया. ये बताना चाहती हैं. हाँ सर. So सिंपल है. I देन वी स्टार्टेड टू अनदर क्लासरूम. हाँ सिंपल है ना. another अनदर then क्लासरूम. देन वी. another class. Then we started uh, to another room. To another room. या कंटिन्यू. कंटिन्यू. देन वी स्टार्टेड विद. Then that time that time the students व्हाट यू वांट टू स्पीक. क्या बोलना चाहती हैं बताइए. this time actually स्कूल सेक्शन के एक 180 स्टूडेंट हुए और कॉलेज सेक्शन के 130. हाँ. सो दैट टाइम, अब यहाँ से उस वक्त, दैट टाइम वी हैड या फिर आई हैड, हमारे पास वन स्टूडेंट, 180 स्टूडेंट. I had 180 students from school section. Right. Yes, and I had 120 students from college sections. बोल के दिखाइए. Simple. That That time I had, that या we time had, I had 180 students from. from school section and 120 students from college section. Great. So हाँ. So and हाँ. So then after that, after that the response is highly is, positive. yeah, Response very good. was sorry. The that Response time was. response was highly positive. So we we started another branch for Mandai area. Uh, this is my fourth branch. This was. This was my fourth branch, Mandai area, and that time that time Mandai branch, my
total student for from school section is was 80, and Yeah. college section from 70 students. Yeah, you can also speak. There were 70 students. There were 70 students from college sections, and I had And 80 students I from. I had or appoint there were. and I had appoint another staff I had for to I had appointed नहीं. I had appointed यानी कि मैंने appoint किया था या फिर for that I appointed another staff to control these sections like this. अब बोलिए फिर से. आपने appoint so किया. so I had appointed another staff uh, For this for Mandai branch okay. Mandai branch हाँ. To control to run Mandai branch. to हाँ, टू कंट्रोल आपने एक स्टाफ अपॉइंट किया एज अ मैनेजर टू कंट्रोल टू रन दैट मंडई ब्रांच. run that Mandai branch. That's good sentence. Okay, and then after that. Now Hmm, after that hmm, Gurukul after that we uh, started another branch in Kalyan city. okay. Mm, yeah, area was Kalyan East, Hmm, but we are hmm. we had not response Now not we good response for this branch. we We accept. had We good didn't we response. didn't we didn't yeah we did not get good Uh, response from that location from that area. We did not get. याद है मैंने आपको सिखाया था did not. मैंने मुझे नहीं uh, मिला, मुझे नहीं बताया, मैंने नहीं yes. बताया तो मुझे नहीं मिला. Then I did not get good response from that area. Continue. Then I did not. Then I did not response uh, नहीं, I for did this. not get. मुझे मिल get यानी कि मुझे नहीं मिला. ट्राई कीजिए. Then Then we had started another branch in Kalyan East is 2014. okay. But uh, we did not get uh, good response for this branch. So We closed. 2000 We closed it. so 2018 we close, yeah, we shut down for आप ऐसे बोल सकते. We winded up the branch. blinded. Winded up, wind up, closed, shut down. Okay. Hmm. In 2018 we Then we winded up. started 2018 we started another branch for Kon Gaon uh, and actually Hmm. this branch is a partnership branch. This branch was we started in This branch 2018. was a partnership branch for to Mhm. मैं मतलब मेरे एम्प्लॉय को ही मैंने वो पार्टनरशिप में ब्रांच दे दी. हाँ, तो I gave one of my employees. ठीक है. हम्म I gave यानी मैंने दे दिया. ठीक है. To one of my employees to run that branch as a partnership. The 50-50% partnership or 60 or 40 partnership. You can also use the same word. 20 or 80 like this.
I gave that branch to my one of my employees. I, I gave I that gave that I gave that branch one of my my employees. employees Huh. Hmm. is In the for partnership. 80 80 80 क्या बोलते हैं उसको 20 Percentage 80 हाँ and 20 परसेंटेज percentage on the basis of 80 and 20 percentage, 80 by 20 हाँ percentage on the basis base of 80 80 and 20. percentage. Hmm. So right now, total I have 5 branches in the name of Gurukul Academy, and it was running successful in all over Mumbai. And I think I am proud of being as a director of this company. And I think that I'm going to open some more branches in few next 2 and 3 years. And I hope I will serve my society while teaching a lot to my students. तो ऐसे मुझे चाहिए आपको लगातार बोलना एक बार सेंटेंस मैंने जो बोला ट्राई टू रिपीट इट. So now, Hmm. so now we have total 5 branches. Hmm. In five branches, Hmm. and I'm so proud of. I'm so proud of Hmm. I'm so proud of being a director of this Gurukul Academy. बोलिए. be the director of Gurukul Academy. Because my Gurukul Academy We is have, working for the we have society. total. We We had have to. total 1,050 students now Very, now teaching uh, and total this how many staffs? academy, and total 96 staff Hmm. in my Gurukul Hmm. under my Gurukul class. हाँ, ऐसा that is बोल okay. हाँ बिल्कुल. Under the banner of my Gurukul classes. ऐसे बोलेंगे तो और भी अच्छा लगेगा. Then you will like better you speak like this under the banner of. under Okay. the banner of in Gurukul classes. Classes, yeah. And I hope that in future I'm going to open some more branches, okay, in other location of Mumbai. बोलिए, try कीजिए. I hope. And And Mohit. I hope I this year I wanted to yeah I will started to another 2 branches in location of Kalyan West and Bhiwandi. I now I subject location for this 2 branch. That's great. That's I think today it was a great journey that